बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome 10th class for General Mathematics, chapter number 3, Algebraic Manipulation. It is lecture number 4. In this video, we cover exercise 3.3, question number 1 and 3 only. So, according to Smart Syllabus of exercise 3.3, question number 1, question number 3, question number 7, question number 9, question number 12, question number 14 and question number 15 are included. There are some points that you should remember while you are solving exercise 3.3. So the first point, because this exercise is about LCM, so first point is related to LCM. LCM stands for least common multiple. So you know very well how to take the LCM of numbers, but now we don't have numbers only, we have algebraic expressions. So the LCM of two or more algebraic expression is the expression of lowest degree which is divisible by each of them without remainder. So अब LCM कैलकुलेट करने का आपके पास जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल. LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स. LCM में हमने कॉमन फैक्टर्स का भी प्रोडक्ट लेना है एंड अनकॉमन फैक्टर्स का भी प्रोडक्ट लेना है. Okay, the third point, which is very important, that common factors are not repeated. Common factors are not repeated while taking product of common factors. जब हम common factors का product ले लेंगे तो जो common factors आएंगे वो repeat नहीं होंगे. अगर 2 common आ रहा है तो 2 को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, right? So let's start the question number 1. Question number 1 is 21a 4 x 3 y, and second expression 35a square x 4 and y, 28a cube x and y 4. So first of all we have to do the factorization of first expression. While doing the factorization of first expression we have to take the prime factorization of 21. So you should take the prime factorization of 21 by yourself. I'm just writing these factors here. So factorization of 21a4 x cube y is equals to, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 21 की तो आ जाएगा 3 7s are 21, 7 1s are 7, तो दो फैक्टर्स आएंगे 3 and 7. So here I can write 3 multiply 7 a power 4. It's mean a multiply a multiply a multiply a, and x cube means x multiply x multiply x, and y is the only one power, that's why y we can write y as it is. So next, factorization of 35a square x 4 and y. So do the prime factorization of 35. So we obtain 5 multiply 7, and a square means a multiply a, and x 4 means x multiply x multiply x multiply x, and y has only one power, that's why we can write y as it is. Next, prime factorization of 28a cube x y 4. So prime factorization of 28 is 2 multiply 7. A cube means a multiply a multiply a. X has only one power, that's why I can write x only one time, and y has a power 4. It's mean y multiply y multiply y multiply y. As you see, this 7 is common. This a is also common. This a is also common here. Okay. अच्छा, अब इसमें जैसे HCF में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि हम लोगों ने वही कॉमन लेना है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो. अगर 3 एक्सप्रेशन है तो तीनों को कॉमन चेक करना है, बट LCM में हमारे पास ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. LCM में अगर कोई चीज़ 2 एक्सप्रेशन से भी कॉमन आ रही है, वी कैन टेक इट एज अ, वी कैन कंसिडर इट एज अ कॉमन. हम इसे कॉमन कंसिडर कर सकते हैं, राइट? तो दिस ए and this a is common, right? So as x is common and this y is common, but there are these two x are also common. हम लोग जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको भी कॉमन कंसिडर कर सकते हैं, और जो किसी दो में कॉमन आ रहा है उसको भी कॉमन कंसिडर कर सकते हैं. सो लेट्स टेक द कॉमन लाइक दैट. 7 कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर a कॉमन है, एंड अगेन इस ग्रीन लाइन से a कॉमन आ रहा है, बट
in this fourth case, this a and this a is only common because there is no another a in सेकेंड एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में से एक कॉमन ले लिया और थर्ड एक्सप्रेशन में से हम लोगों ने एक ए कॉमन ले लिया. तो दीज टू एज आर कॉमन. हम किसी दो एक्सप्रेशन में से भी कॉमन निकाल सकते हैं. दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ LCM. ओके, सो दिस एक्स इज कॉमन and this y is also common. Here these two x are common and these two x are also common. So product of common factors, as you know, what's the formula of LCM? Product of common factors multiply product of uncommon factors. तो पहले हम common factors का product लिख लेते हैं. और हम लोगों को point भी याद है कि वो हम लोगों ने अभी point पढ़ा था. Common factors are not repeated while taking product of common factors. Common factors को हमने repeat नहीं करना. As you see, 7 3 times था, लेकिन अब ये common आ गया तो we can write it only one time. 7 a multiply this same, multiply this same, multiply x, multiply y, and then multiply this x, and then multiply this x. So 7 as it is. A multiply a gives you a cube. X multiply x gives you x cube, and this y is simple. So product of common factor is 7 a cube x cube y. So do the okay. So as you see, there are some uncommon factors. How many uncommon factors are here? 3 is uncommon. This a is uncommon. Okay, in first expression, factorization of first expression, there are only two uncommon factors, 3 and this a. Okay, in factorization of second expression, 5 is uncommon and this x is uncommon. Here 2 is uncommon, this 2 is also uncommon, y is uncommon, this y is also uncommon, and this y is also uncommon. So write down it. Product of uncommon factors are 3 multiply 5 multiply 2 multiply 2, a multiply x multiply y multiply y multiply y. So 3 5s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60. A as it is, x as it is, y multiply y gives you y cube. So according to formula of LCM, product of common factors multiply product of uncommon factors. Product of common factors का final answer आया था 7a cube x cube y, multiply sign as it is. Product of uncommon factors का आंसर आया 60a x y cube. So 7 को सबसे पहले आप 7 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, so you obtain 420. a cube and a मैन a क्यूब a से मल्टीप्लाई होगा तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइन की पावर्स ऐड हो जाएंगी. पावर 3 में पावर 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम a पावर 4. सिमिलरली x क्यूब प्लस x क्यूब मल्टीप्लाई x1 गिव्स यू x पावर 4. y एंड y क्यूब मल्टीप्लाई गिव्स यू y पावर 4. So your homework is exercise 3.3, question number 3. That is very very simple. You should do this by yourself. See you next time. Allah Hafiz.